Good afternoon, everyone. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes, and today we have got this speaking topic, which is this. So again, मैंने आपको बार-बार बताया in the exam you will get 3 minutes to prepare the task. The most important thing मैंने आपको यही बताया है कि 3 minutes would be the preparation time and 5 minutes you will have to speak. ये भी आपको बताया था कि सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है, तो जिनको नहीं पता आज 5 जनवरी है तो प्लीज 4 जनवरी की रिकॉर्डिंग देखना एंड यू विल गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट कि ओईटी में टास्क कैसे चलता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको समझना है कि जो आपके सामने एग्जामिनर बैठा है उसके हाथ में कोई पॉइंट्स नहीं है, तो आपको उसको जेस्चर्स देके फेशियल एक्सप्रेशंस के आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग। तो आप पेपर में 3 मिनट्स में यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, मैं आपको अभी लिख के भी दिखाऊंगा। तो आपको कुछ ऐसा टास्क आएगा और आपको 3 मिनट्स मिलेंगे प्रिपेयर करने के लिए। तो सबसे पहले देखनी है सेटिंग, हॉस्पिटल वार्ड। द पेशेंट इज अ 63-year-old ट्रक ड्राइवर हु अराइव्ड इन द इमरजेंसी बाय द एम्बुलेंस। तो आपको सिचुएशन पता लगी कि एम्बुलेंस में आया था पेशेंट और 63 year old है। His CT scan showed that he had a stroke. तो CT scan में पता लग गया stroke है। He was stabilized in the hospital with medication. तो अब वो medication के साथ stabilized है, stable है, ठीक है, he is stable. He is to be treated long term with warfarin 6 mg per day and is required to have regular blood test. तो डॉक्टर ने उसको 2 एडवाइजेस दी हैं कि आपको रेगुलर ब्लड टेस्ट करवाना है और आपको वारफेरिन लेनी है लॉन्ग टर्म। वैसे भी स्ट्रोक हुआ है और स्ट्रोक में क्या होता है, ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन रुक जाती है। सो इन दैट केस वारफेरिन विल हेल्प टू कंटिन्यू विद द ब्लड सप्लाई बिकॉज वारफेरिन इज अ ब्लड थिनर एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स। चलिए अब आते हैं वापस टास्क पे। तो 3 मिनट्स में मिलेगा आपको टास्क, कैसे पेंसिल से लिख लेना चाहिए अपने पेपर के साइड में, और एग्जामिनर को सिर्फ पेशेंट समझना चाहिए और उसकी तरफ देखने की आपको कोई जरूरत नहीं है बिकॉज इट्स गोइंग टू बी द ऑडियो रिकॉर्डिंग। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू टेक योर टास्क इन हैंड्स। और इसके मार्क्स होते हैं और इसको देखते रहना है बीच बीच में। फेशियल एक्सप्रेशंस और जेस्चर्स की वरी नहीं करनी है। So we are starting the speaking. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Please like, subscribe our channel and share it with your friends so that they can also learn about OET, so that they can also know how simple OET is and why nurses and medical professionals should go for OET. So please like, subscribe and share our videos with your friends as well. Okay. So second thing is that अपार्ट फ्रॉम दिस ब्लड सप्लाई, अब ये आपका टास्क है, आज द पेशेंट व्हाट दे नो अबाउट स्ट्रोक। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, पेशेंट से पूछना है स्ट्रोक के बारे में क्या है। सेकंड, एक्सप्लेन व्हाट कॉजेज स्ट्रोक्स। वैसे अगर पेपर में आएगा तो आपको ये बताया होगा, यहाँ पे ये दिया होगा आपको ब्रैकेट में कि सच एज न्यूट्रिशन, वेट गेन, हाई वेट, ज्यादा वेट होना, और न्यूट्रिशन कैन बी वन ऑफ द फैक्टर्स, आपको ध्यान रखना चाहिए, ऑयली फूड्स नहीं खाने चाहिए, ऐसे वैसे आप बता सकते हैं क्योंकि ब्लड सप्लाई ब्रेन को किसी भी कारण से रुक सकती है। इट कैन बी ड्यू टू अ क्लोट एज वेल। व्हाट द मेडिकेशन इज फॉर, तो ये बताना है प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस का मतलब अपने आप में क्लोट होता है, तो क्लोट को डिसॉल्व करने के लिए ये मेडिकेशन है। रीअश्योर दैट हिज कंडीशन इज स्टेबल। एम्फेसाइज द पेशेंट ऑफ द डॉक्टर्स ऑर्डर्स टू हैव रेगुलर ब्लड टेस्ट। तो उसको बार बार एम्फेसाइज करना है। तो आपको सेकंड पॉइंट दे रखा है, तो यहाँ पे आप साइड में लिख सकते हो, पेशेंट से पूछना है आस्क व्हाट पेशेंट नो अबाउट स्ट्रोक्स। तो फटाफट पेंसिल से लिख दो, वहां पे पेंसिल से जल्दी लिखा जाता है। सेकंड, आपको बताना है यहाँ पे कॉजेज, तो आपका सेकंड टॉपिक ही है। थर्ड, मेडिकेशन, प्रिवेंशन ऑफ थ्रोम, प्रिवेंशन के लिए आपके। थर्ड की करंट कंडीशन स्टेबल है, उसको दोबारा एम्फेसाइज करना है और कहना है आपको रेगुलर ब्लड टेस्ट करवाने हैं क्योंकि डॉक्टर ने आपको बोला है ये करवाने हैं। तो आपका ये पॉइंट्स आप बना रहे हो कि इसको देख के आप बोल पाओगे, फिर जो भूलोगे वो यहाँ से बोल पाओगे। क्लोजली मॉनिटर्ड किया जाएगा ब्लड टेस्ट के थ्रू आपके स्ट्रोक्स के लिए, और प्रिवेंटिव मेजर्स ये हैं कि आपको वेट लॉस करना चाहिए। तो आपको ये सारा टास्क ओईटी में दिया होता है और अब आपको 5 मिनट्स बोलना होता है। और पेशेंट हो सकता है बिल्कुल भी कोऑपरेट ना करे, हो सकता है बहुत ज्यादा कोऑपरेट करे और बहुत ज्यादा बोले, तो आपको ऐसे भी लग सकता है कि वो अग्रेसिव है। तो आपको हैंडल करना होता है। अगेन ओईटी इज ऑल अबाउट हैंडलिंग द पेशेंट। सो नाउ आई वुड लाइक टू कंटिन्यू विद द टास्क। तो आपको पेपर में कैसा करना है मैं आपको वो बता रहा हूँ। So, good morning, my Bhupesh. Good morning. My name is Bhupesh, and I am your charge nurse. So, how are you feeling now? So, patient will say, "Nurse, I am feeling better, but I am really worried. I had to come to emergency. Do you think I am fine now?" Well, of course, you are fine now, and you must be feeling better as well.
The most important thing is that your current condition is stable, and this is because of the medication that we have provided you. So don't worry, now your life is all good and you are out of danger. So please do not worry about anything. But nurse, what happened to me? Could you please tell me what was that and why did it happen? Well, see, you have suffered from strokes. Do you know what strokes are? फिर patient कहेगा, no nurse, I do not know. Do you know what causes it? No nurse, I don't have any idea about strokes. Okay, so I will give you a brief idea what strokes are. Strokes are basically, these are kind of problems which happen in your brain due to the poor supply of the nutrition to your brain. So it can happen due to many reasons. One of the main reasons, and also in your case, it is because of the clot formation. When there is any kind of blood clot, then there is blood supply to the brain which is hampered, and that is why you suffer from problems like these. But nurse, why did it happen with me? See, there can be various reasons for that. It can be because you have little more weight than your normal average person, so you should understand that losing weight will play a very important role, but that I will tell you later on. First of all, I would like to emphasize that for the strokes, medications are very important, and doctors have told that you need to be treated with long term warfarin, that is 6 mg per day, and also you are required to have regular blood tests. But nurse, why regular blood test and what is this warfarin? See, as I have already told you, that this is due to the blood clot. That is the formation of clot. That means your blood makes a clot. And warfarin is kind of a blood thinner that prevents the clot formation. So it is kind of a medication which is very important to prevent any kind of clot formation in your body. And this is a very good medication. And apart from this, second thing I wanted to tell you that you need to have regular blood tests. Blood tests are very important because it prevents thrombus formation. Thrombus means clot. So it helps in the prevention as well as the treatment of thrombosis, that is clot formation. So basically, this medication as well as these blood tests will help you to have good recovery, and also we will keep you monitoring through these blood tests so that you do not suffer from another stroke. So these blood tests will give us an indication that whether you have the chances for the next stroke or not. Oh my god, nurse, you are saying I might have another stroke? I have heard that people die because of stroke. I am really worried. Nurse, please save my life. Nurse, please save my life. Well, please do not worry. We are here to help you. And I do understand that you are really concerned about your current condition, but I would like to reassure you that your current condition is absolutely stable and there is nothing to worry. But I would like to emphasize on this point again that you need to have the regular blood test, which will ensure that you are closely monitored in order to prevent another stroke. So we will keep you in close monitoring with the help of these blood tests so that you do not suffer from any other stroke. So it is very important for you to have regular visits and to undergo regular blood tests to make sure that you do not have any of these things. But nurse, how could I prevent anything like this happening in the future? Well, don't well see. There is another advice that I would like to give you, that the preventive measure for this particular kind of problem is to lose weight. As I have already told you that there can be multiple factors which can lead to clot formation. One of those factors can be high weight as well. So you need to lose weight, which will play a very important role, and also good nutrition. So for losing weight, of course, dietitian will come and she will explain you or he will explain you everything about how to lose weight. But at this moment, what I can say you is that you should have more of fruits and vegetables in your diet rather than having oily foods, which kind of increase your weight. So it is very important to have good nutrition, to have regular exercise, and to do everything that prevents you from gaining weight, because gaining weight is directly related to strokes. And now you should focus on losing weight. And for this, proper nutrition and moderate exercises will play a crucial role. Also, after me, physiotherapist. So is it okay? Well, nurse, but I'm really scared. Well, again, I understand your concern, but I would like to tell you that
you have suffered from stroke, but now you would always be in our close monitoring with the help of the blood test. Second, warfarin will help to prevent any kind of clot formation in the future. And third, dietitian and physiotherapist will help you in losing weight. So please do not worry, and you will be fine soon. And also, your current condition is stable. That I would like to tell you again. So if you have any problem, there is a buzzer beside your bed. Please press the buzzer and we will be here to help you. And rest, take care of yourself. Now calm down and have a good sleep for a while. And now you are completely out of danger. Okay. Please like, subscribe, and hit the bell icons for the free OET coaching videos.